conducted a random re-audit, a recheck on your tax filing, and we found out several miscalculations on your tax, where £2,600 is outstanding on your name. Because your taxes were not paid enough, your taxes were paid less. This is the only reason that why there is a legal case against you has been filed to the court regarding 4 serious allegations on your name. Now, before you have any questions, and I go ahead, sign up your case papers and forward it to the higher authorities, can you let me know, is it a mistake by not paying this amount of tax or a willful activity to defraud the UK government, Pooja? I'm not aware of any such tax evasion being done by me, because when I entered UK, I was working as a student for only 20 hours and there was no obligation for me to pay tax. It's just hardly for me 3 months before I started working as full time, and whatever the tax process is being taken care by my company, and I have that form 45, I believe, where the whatever the tax process was there is being taken care by the company. So they didn't inform me anything about paying the tax or whether I'm not paying the tax. So I'll explain. See, that this is what has happened. See, Pooja, your taxes are deducted from your salary, right? From your wages, right? Yeah. Your employer files your tax, correct? Yeah. So, Pooja, what has happened? We have found out several miscalculations on your tax, which means your taxes were not calculated correctly, and because of the wrong calculations, your taxes were paid less. So, there is an outstanding amount on your name for £2,600. But Pooja, I'll make one thing very clear to you right now, that your employer is a third person for this investigation, because your employer is filing the taxes on your behalf under your name with your tax code, which comes out of your salary, right? So your employer is not paying the tax from their own pocket, from their own money. They are paying the tax from your money, from your salary only. So you are the direct owner of your own tax. So we have nothing to do with your employer. Nothing is going to happen to your employer. If your taxes are paid less, if anything goes wrong with your tax, you will be responsible for your own tax, Pooja, okay? Okay. So, but I didn't receive... And right now, Pooja, when the judicial department checked your past record, they found out that you are a law-abiding citizen and that you do not have any criminal record in the past, right? Yeah. So that is the reason the court is giving you 2 options. The first option is taking this matter to the court. If you think that there is nothing wrong with your tax, then you can take this matter to the court. You can hire a lawyer for yourself and fight this case against the HMRC. But make sure that your lawyer should be a criminal lawyer who can challenge the UK government. Because in case you are found guilty, then you have to pay a penalty fine of £29,000 or an imprisonment of 5 years. This is the first option, yeah? Mm-hmm. Okay. Whereas the second option is OOCR, known as out of court restitution, which means if you want to resolve this case out of the court by accepting this mistake as an honest and innocent mistake, in that case, we can at least try to help you. Because I want you to understand that there are a lot of people in United Kingdom who makes innocent mistakes which there are any consequences. In that case, we help the person to resolve the case out of the court. So first of all, Pooja, I want to know whether you would like to take the matter to the court or you want to resolve the case out of the court, Pooja. First of all, I want to know my tax code. So I believe you have my file in front of you. So can you give me my NI number, please? थी। सो आज मुझे अचानक से आफ्टरनून में एक कॉल आया और वो कॉल
में मेंशन किया गया कि वो कॉल मुझे HMRC की तरफ से आई है और वो कॉल में ये है कि मैंने कोई टैक्स इवेशन किया है जिसको जो फ्रॉड है यूके में, और मेरे लिए अरेस्ट वारंट इशू की गई है। सो ये तो सुन के मैं पहले थोड़ा सा चौंक गई, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी कि ऐसा कुछ हो रहा है या मैंने ऐसा कुछ किया है। जो चीज़ वो मुझे बता रहे थे वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी इनकम अर्न ही नहीं की थी कि मेरे को टैक्स पे करना पड़े। और जब मैंने फुल टाइम काम शुरू किया था तो मेरे जो एम्प्लॉयर थे उनका ये डिपार्टमेंट है टैक्स पे करना ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। सो मैंने कोई टैक्स पे किया नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी कि मेरा टैक्स जो भी था वो डिडक्ट हो जाता था मेरे पे स्लिप से। सो मैं उसमें तो क्लियर थी कि मेरी तरफ से तो कोई फॉल्स नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। लेकिन वो आपको कॉल में काफ़ी देर तक आपको ये कन्विंस कर देंगे, सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आपने शायद ही कोई मिस्टेक कर दी हो, आपने टैक्स पे नहीं किया हो। और वो आपको काफ़ी सारे कंडीशंस बताएंगे कि आप क्रिमिनल लॉयर अपॉइंट कर लो। अगर आप लॉयर अपॉइंट नहीं करते और अगर आप गिल्टी प्रूफ हो जाते हो तो आपको अराउंड 29,000 पाउंड की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मेरे ऊपर 2,600 पाउंड की टैक्स इवेशन की चार्जेस मुझे लगाए गए हैं। और मैं जब सोच रही थी कि मैंने तो इतना शायद अर्न भी नहीं किया होगा कि ये 2,600 की टैक्स आ कहाँ से गई, क्योंकि आपकी अर्निंग उतनी होनी चाहिए कि आप टैक्स पे कर सको। सो बहुत कुछ चल रहा था जब वो कॉल हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आप कोई भी तरह के इस तरह के फ्रॉड कॉल में बिल्कुल भी ना फंसे। अगर ऐसा कुछ भी होता है जो कि कभी मैंने सुना नहीं है होते हुए, तो आपको मेल आएगी, आपको प्रॉपर लेटर आएंगे घर पे HMRC की तरफ से, आपको प्रॉपर मेल आएगी HMRC की तरफ से। आपको कोई कॉल करके इस तरह से डरा धमका नहीं सकता है। आपके पास मेरी सारी प्रोफाइल आपके आंखों के सामने है। आप जो मुझे कह रहे हो कि आप मेरी सारी डिटेल्स देख सकते हो, सो दे सेड यस। सो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मेरे को मेरा टैक्स कोड बता दीजिए या फिर मेरा NI नंबर बता दीजिए, बिकॉज NI नंबर से ही आपका टैक्स डिडक्ट होता है। वही आपका मेन यहाँ पे इनकम का प्रूफ है। जैसे हमारे इंडिया में पैन कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे NI नंबर होता है। मैंने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, दे डिसकनेक्टेड माई कॉल, और उससे से मुझे समझ में आ गया कि ये पूरा ही तरह से फ्रॉड कॉल था। क्योंकि फ्रॉड कॉल्स में ना पड़े, ये स्पैम है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।